अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो टेस्ट 9 है इसका एक्सट्रैक्ट 1 पार्ट ए का डिस्कस कर लिया है। सो आपको समझ आ गई है कि 30 सेकंड आपको मिलते हैं इसको ऊपर से नीचे तक जल्दी रीड करने में, हाईलाइट करने में, और फिर उसके बाद वो बोलता जाएगा और आपने लिखते जाना है। बात तब ख़राब होती है जब आप एक चीज़ मिस कर देते हो, फिर आपसे ये ना सारे मिस होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि ये आप मिस ना करो। सो ये हमने क्या कर लिया था, पार्ट ए का एक्सट्रैक्ट 1 कर लिया था। अब ये हम उसका एक्सट्रैक्ट 2 करते हैं, जो कि हम उस टाइम छोड़ दिया था हमने। So 13 to 24. अब कह रहे हैं कि 13 You hear a gastroenterologist talking to a patient called Toby Smithers. Okay. For questions 13 to 24, complete the notes with a word or short phrase. ठीक है। You now have 30 seconds to look at the notes. ठीक है, जल्दी से हम देख लेते हैं कि पेशेंट को इनिशियली जो है वो स्टमक अपसेट था और उसका मेन सिम्टम जो है ना वो क्या है, मेन बैकग्राउंड वो क्या बता रही है। अब वो कह रहा है कि उसने कहा फीलिंग डैश इमीडिएटली आफ्टर मील एक्सट्रीमली डैश, रात के टाइम हो जाती है, कोई हिस्ट्री नहीं है। मेन सिम्टम सिमिलर टू दोज दैट इज एसोसिएटेड विद डैश। जीपी ने इनिशियली क्या डायग्नोज किया था? जीपी ने फिर ट्रीटमेंट प्लान ये बनाया था कि डैश इनटेक हाई रखेगी और ये रिजीम उसको दी थी फॉर मील। दोनों टेस्ट उसके कुछ हुए थे, वो दोनों क्लियर थे। फिर डैश टेस्ट हुआ था, फिर डैश कंफर्म हो गया और ट्रीट हो गया। इरेडिकेशन भी की जो कि कंफर्म बाय डैश एंड ही वर्क एज डैश। ठीक है, अब देखते हैं। Toby Smithers. Now, I think you've been having Main some stomach symptom. problems. Yes, that's right. For some time, actually. Okay, I've got some notes here, but perhaps you can tell me in your own words about Bitte. those problems. About any treatment you've been having, or anything else you can remember that seems relevant. Okay. It all started about 9 months ago with a stomach upset. Okay. Okay. I thought I'd caught the vomiting bug that was going round. Yes. Basically, I just couldn't keep anything down. Swallowing no difficulty, diarrhea or okay? anything, but it was pretty bad. Right. Anyway, it cleared up in a couple of days, and I Yeah, went back to swallowing eating down, okay? normally. The thing was, though, from that time on, whenever I had a meal, lunch or dinner, I'd feel incredibly sleepy almost before I'd finished, and for about half an hour afterwards. I didn't feel tired as such. I mean, Night not पे in क्या the हो sense रहा of fatigue. It's just that I could hardly keep my eyes open. I see. Were you in any pain? No, none at all. The only other symptom was that I was getting very thirsty, especially at night. So I Especially was at drinking a lot. Right. So I went to see the doctor, expecting some simple explanation, but she said my symptoms were quite unusual. Well, not the drinking. She explained that the stomach upset had left me dehydrated. Yes, that's right. But it didn't explain my other main symptom. And the dehydration passed? Yeah, that was just a temporary thing. Then she asked me if I'd ever had stomach cancer. No history of Which was a stomach bit cancer. worrying. But you haven't? No. No history. But then she explained that there's a condition that has similar symptoms to those I had. She didn't think I actually had that condition because Similar it to generally those? affects people who've had stomach surgery, and I hadn't. It's called gastric dumping syndrome. Gastric dumping syndrome. ठीक है? Anyway, what she suggested as, well, like an interim measure was following the treatment plan for that syndrome, even though I probably hadn't got it. Device to keep So what? I had to keep drinking because I needed to keep my fluid levels up. Yes. Fluid But not intake whilst high. I was eating. So in other words, I had to separate the two activities by about half an hour. Then as for the meals themselves, she suggested an eating regime that she called little and often. Little and so, often regime, no ठीक है? major blowouts, no skipping meals either. Sure. Did that help? Yeah, it did, but it was only meant to help me in the अब short टेस्ट term. के बाद आपने समझ Because सुननी है। meanwhile, I had various tests. I gave a urine sample. Urine? Went for a blood test. Blood. Neither of which showed up anything untoward. Both were clear. So I ठीक है? just Urine and hoped blood. it'd clear up of its own accord. But it didn't. Well, no. The regime worked all right, but as soon as I went back to eating and drinking normally, the symptoms would come back. Okay. So the doctor referred me for an endoscopy. Endoscopy I performed, saw a ठीक है? gastroenterologist for that. He'd looked at my other test results and examined me and everything. Sure. Dash And of confirm course, and once the treated. results of that What? came back, they showed that I'd got Helicobacter pylori. Helicobacter I see. pylori. So I went on the course of treatment, the 3 drugs for 2 weeks, Yes. 2 different antibiotics and an antacid. That's the combination which gets rid of it. Yes.
After that, I went back for a breath test, and that was all clear. Breath So I test. thought that'd be the end of it, and I'd be back to normal. But you're not. Well, I've given it a couple of months, Work but as the dash. अब ये symptoms are सुनना the सिर्फ, same. ठीक है? Okay. If I stick to the eating regime, I'm okay. When I come off it, I'm back to square one. So I'm thinking, sure, the stomach problem that the gastroenterologist found has been dealt with, but that wasn't what was causing the original problem. And how's this affecting your everyday life? I mean, I can live with it. Obviously, it would be different if I was driving for a living or operating machinery, but I'm a teacher, so Teacher. it's okay. Work as a But teacher. to cut a long That's it. story short, I asked for a second opinion. And so here I am. So this is it. ये अब आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया. अब इन आंसर्स को भी एक दफ़ा देख लेते हैं. आई होप कि ठीक है, सारे हमने खुद सुने हैं. और यहाँ पे इसके जो हैं वो आंसर्स इन्होंने दिए होंगे. That is the end of part A. Now look at पहला ही part गलत है B. हमारा, ठीक है. यानी पहले में उसका वॉमिटिंग था, मैंने नहीं सुना, मुझे डिस्फीजिया या उसका ऐसे लगा कि सॉल्विंग डिफिकल्टी है. उसके बाद स्लीपी ठीक है, थर्स्टी ठीक है, स्टमक कैंसर है, डंपिंग सिंड्रोम, फ्लूइड लिटिल एंड ऑफन, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, एंडोस्कोपी, हेलिकोबैक्टर, ब्रेथ टेस्ट एंड वर्किंग एज अ टीचर. ये बाकी सारे ठीक हैं. अब हम ओईटी को ओवर आइल्स प्रेफर भी क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अगर एक बंदा स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है तो जाहिर सी बात है एच पाइलोरी हो सकता है, तो उसका यही ब्रेथ टेस्ट यूरिन एंड ब्लड टेस्ट हुआ होगा. उसके अलावा एच पाइलोरी उसको हुआ होगा, जो रेडिकेट हुआ, रेडिकेशन उसी की होती है, और रेडिकेशन कंफर्म भी ब्रेथ टेस्ट पे ही होती है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा हमें मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हुए ना एज मिल जाता है कि क्या हो सकता है, किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या नहीं हैं. तो ये चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल हैं इन ओईटी एज़ कम्पेयर टू आइल्स. उसमें तो कोई भी एक रैंडम पैरा आ जाएगा, आपने सुनना होगा और लिखना होगा, वो कहीं से भी उठ के आ जाएगा. इंग्लिश की नॉलेज में कहीं से भी कोई दो बंदे बात कर रहे होंगे और आपने उसको फिल करना होगा. बट यहाँ पैटर्न एक डिजीज़ की बात होगी, डॉक्टर पेशेंट बात कर रहा होगा, थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटे पार्ट ए, ठीक है. सो आई होप कि अब इसको जितना आसान किया जा सकता था मैंने किया है. मैंने काफ़ी लेंथी वीडियोस देख के इसको सीखा था, बट अब इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं. सारा मटीरियल मुझे वे नहीं मिल रहा कि कहाँ पे पोस्ट करूँ, लाइक व्हाट्सएप में, फिर पता नहीं कब कब लोग ज्वाइन होंगे, यूट्यूब का भी इतना मुझे समझ नहीं आ रहा. आई फाइंड टेलीग्राम या वट एवर, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें पोस्ट कर दूँगी, ठीक है. तो ये पार्ट ए है जो कि आप ओईटी में करते हो. अब जो पार्ट बी है ना, ये और सी मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बट इसमें आपने समझना है कि आपके पास थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है. पार्ट ए आसान होता है, ठीक है. अब मैं यहाँ से पहले आपको पार्ट बी और सी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके सैम्पल्स के साथ उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है. अब ये बेटे आपके पास जो है वो पार्ट बी स्टार्ट होता है, ठीक है. अब पार्ट बी के अंदर देखो उन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि you hear a consultant talking to a woman whose father has just been admitted to hospital. What does she want to know about his condition? वो क्या जानना चाहती है डॉक्टर से? How serious it is, how much pain it's causing, how long before there will be a diagnosis. वो ना डॉक्टर से आके बात करेगी. ये छोटा सा मतलब 40 सेकेंड का एक एक्सट्रैक्ट आपको सुनाया जाएगा जिसमें वो बात करेगी डॉक्टर से कि ओके सो आई ऑलरेडी नो अबाउट द डायग्नोसिस बट आई वांट टू नो कि ये कितना पेनफुल है या क्या है, ठीक है. मैं सुनूंगी, मुझे याद नहीं है, तो आपने उसको टिक कर देना है. असल में बातें ये तीनों उस एक्सट्रैक्ट में होती हैं, इसलिए ये मुश्किल है. आपने इस क्वेश्चन के मुताबिक समझना है कि वो पूछ क्या रहा है. Why does she want to know? वो क्या जानना चाहती है, ठीक है. शायद वो बोल दे डॉक्टर आई नो दैट इट्स क्वाइट पेनफुल, अब पेनफुल पे नहीं टिक कर देना, वो जानती है ऑलरेडी कि ये पेनफुल है. वो मज़ीद क्या जानना चाहती है वो आपने सुन के लिखना है, ठीक है. You hear a training nurse receiving feedback from her tutor regarding the about the ward round she just completed. What would have improved the nurse performance? वो उसको क्या बता रहा है कि क्या चीज़ तुम्हें बेहतरी कर सकती है. Eliciting information from the patient, patient को betterly inform करो या अपडेट को नोट्स को मज़ीद अपडेट करो, या अब हमें सुन के ही पता चलेगा. ये तो पार्ट बी हो गया, ठीक है. पार्ट सी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें कोई रिसर्च की बात चल रही होगी, अभी आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. डॉक्टर डीन सेज दैट द पेशेंट विद टेनिस एल्बो डैश इन द फिजियोथेरेपी प्रोग्राम. डॉक्टर डेनिस ने वो ना एक रिसर्च बताएगा कि हम आज टेनिस एल्बो पे बात कर रहे हैं, लोगों को ये मसले हैं, इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये रिसर्चेस की ये आउटकम है. तो आपने उसकी बात सुनते जाना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है. सो पार्ट सी के अंदर भी लाइक पार्ट ए 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है बेटे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिसनिंग सब यूनिट. बी और सी में एक आध प्रैक्टिस कर देती हूँ. आई होप पार्ट ए क्लियर हो गया है. पार्ट ए में कोई कंसर्न कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें. एंड पे आपको ना 2 मिनट्स दिए जाते हैं, लाइक आपने अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस लिख दिया है तो आप इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है. फॉर द साथ साथ आप इसको लिख लो, बाद में 2 मिनट्स में आप इसको ऐड करके फुल फॉर्म लिख सकते हो. सो एनी कंसर्न एनी क्यूरी रिगार्डिंग पार्ट ए मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग. थैंक यू सो मच.